I'm done doing the naughtanki. Shall we get into the video? Hello. I am Jabin Sarang and welcome back to my channel. If we are friends on Instagram, you would have seen this already. If not, let's start. Well, I am starting with my Color Essence HD foundation and quickly setting it with a powder so that it stays in place. Taking our ever so trusty Natio bronzer, I am getting the crease back before we move on to the colors. Now as you can see, मेरा ईद का dress brown and golden है, which is a very nice and a very new color for me. But अगर आपका कोई और color है तो आप brown के साथ वो color use कर सकते हो. I have this palette जिसमें मेरे पास almost सारे color के options हैं, and as you can see in the palette, सारे colors brown के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. But for this video मैं सिवाना का ये वाला brown palette use करने वाली हूँ because इसमें के brown colors मुझे ज़्यादा पसंद है और हम उसको स्मोक आउट करने के लिए यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वी नीड गुड ब्रशेज़, और ये दोनों से ज़्यादा फेवरेट मेरा और कोई ब्रश नहीं है व्हेन इट कम्स टू आई शेडो एप्लीकेशन. छोटा वाला ब्रश जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आई यूज़ इट टू जस्ट पिक अप द प्रोडक्ट एंड पुट इट इन प्लेस, एंड वंस इट इज़ राइट वेयर आई वॉन्ट, मैं बड़ा वाला फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करके उसको और ज़्यादा ट्रांजिशन या ब्लेंड करती हूँ, सो दैट लाइक हियर इन दिस क्लिप, सो दैट इट लुक्स नाइस एंड पुट टुगेदर. अगेन गोइंग बैक इन विद द स्मॉलर एंड बिगर ब्रश, आप इस तरह से प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हो. और मैंने ये वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है सो दैट यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड कि ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है और आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हो. नाउ टेकिंग द बिगर ब्रश विथ नो प्रोडक्ट ऑन इट, हम सर्कुलर मोशन में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम सर्कुलर मोशन में जाके बहुत ही आसानी से ये पूरे लुक को ब्लेंड कर सकते हैं. Now taking my Huda Beauty palette, I am going to use one of these shimmers. मैंने सोचा था कि मैं गोल्ड यूज़ करूँ because वो बहुत अच्छा लगेगा, but that's also very classic. So I decided to first go with this pink shimmer, and as you can see, just a very slight tip and so much products come into your hand. आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. That is the beauty of original products. और similarly मैंने फिर golden color पिक किया और उसको बीच में ट्रांजिशन किया. This way my look gets a little more dimension. Moving on to the face, I am just covering it up with my Color Essence HD foundation. No big deal here, you've seen me do this a lot of times. In the same foundation, I am going to conceal under my eye, और इससे पहले कि वो crease हो जाए, I am just going to take some Pond's powder as a baking powder and bake under my eye because मुझे इस step की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. If you don't require it, you can simply skip it. Taking the same sponge but not any product in it, I am going to tap it all over my face because I like to set my face. If you want the dewy finish and you don't like to do this, you can skip it. I am using this Miniso eyebrow kit, which is my absolute favorite right now, and I'm not going to again get into the details of how I do my eyebrows. मैंने इस part को fast forward किया हुआ है because I have separate videos on how I fill my eyebrows. You can check that. I will link it in the description box below. If you feel that you need to correct it, you can simply take your powder brush, go over it, and it's going to look nice. Moving on to the eyes, I'm just going to smoke out the lower lash line with the same brown, not using too many colors here. And then moving on to the contour, I'm just going to use my MAC shade and contour. Contour is the love of my life. And an absolutely simple trick is कि पहले आप product place करो and then from the tip of the tapered contour brush उसको blend करो, बहुत easily blend हो जाता है. This powder brush trick is your absolute friend when it comes to correcting anything that you feel has gone overboard. जैसे अभी मैं blush लगा रही हूँ and I'm going to correct it with powder brush. I use the same powder brush to remove my baking. I use that powder brush to correct any and everything, and it works like a charm. Using my absolute favorite and the most amazing product that I own, the Becca highlighter, I'm going to highlight the shit out of my face. As you can see, it brings back so much life, so much health, and so much glow.
After having filled my quota of highlighting, I go back to nose contouring, and this is life. This is love. You just have to simply use two fingers, and as you can see, my nose is nice and contoured. Maybelline has one of the best mascaras out there, except for one mascara which is called eyelash sensation. मुझे Maybelline के सारे mascaras बहुत ज़्यादा पसंद है. As you can see the difference right here on the screen, it was so amazing. I tried to wink and I realized कि मैं बिल्कुल wink नहीं कर सकती हूँ, so I just gave up. But here is the trick: using either the end of the brush or your finger, you just need to pull them or push them up like that, and you will see the difference in a second. बहुत इग्नोर कर लिया हमने लिप्स को. लेट्स गो. सो आई एम जस्ट यूजिंग अ पिंक लिपस्टिक हियर टू शो यू टू वेरिएंट्स, बट व्हेन इट कम्स टू न्यूड्स मुझे पिंक से ज़्यादा अच्छा एक बेसिक न्यूड कलर लगता है, बट आई एम स्टिल गोइंग टू शो यू द डिफरेंस. सो दीज आर द टू लिपस्टिक्स. द फर्स्ट वन इज़ द पिंकिश वन. इफ़ यू लाइक इट हियर यू कैन जस्ट स्टॉप इट, बट आई एम गोइंग टू गो इन विद द न्यूड वन एंड यू विल सी वाई. If you feel that I'm eating the product, no, this is a trick that I learned from my mom, where she always asks me to cover the innermost part of the lips as it will look nice, and it truly does. And those were the two lipstick options from Matte Me. That is the whole look, but because it is Eid, let's do something different, let's do something special. I am going to actually wear the hijab and show you that if you tie up the whole hijab, how the whole look looks. I'm a Muslim, I know how to tie a hijab. If you don't, there are a lot of tutorials online, and I love it this way. There we go, that's the final look. I hope you liked it. Please give it a huge thumbs up, and Eid Mubarak to everyone. I love you guys. Bye.